Another, sir, 20 seconds, sir. Pranav, sir, we can start now. नमस्कार मित्रों, कांग्रेस कार्य समिति की महत्वपूर्ण बैठक के बाद बुलाई गई इस विशिष्ट पत्रकार वार्ता में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ हैं संगठन प्रभारी महासचिव श्री केसी वेणुगोपाल जी, कार्य समिति के 2 वरिष्ठ सदस्य श्री पी चिदम्बरम जी, पूर्व वित्त मंत्री, एवं श्री अजय माकन जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री। शुरू में वेणुगोपाल जी इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट देंगे, उसके बाद श्री चिदम्बरम जी मेन स्टेटमेंट पढ़ेंगे और फिर अजय माकन जी हिंदी में। उसके बाद फिर सवालों के लिए हम आपका फ्लोर खोलेंगे। सर वेणुगोपाल। Thank you, Pranav ji. Good afternoon to everybody. I hope everybody will be safe and secure in this crucial juncture. Dear friends, a meeting of the Congress Working Committee was held today to discuss the second wave of COVID-19 pandemic and related issues. Along with the Congress Working Committee members, permanent invitees, and the chief ministers of the Congress ruled states also participated in this 2.5 hour long fruitful meeting. Honorable Congress President highlighted the important issues related to the pandemic and which has been already circulated to the media. Following this, 30 working committee members participated and they all put forward valuable suggestions on this grave matter. Honorable former Prime Minister Dr. Manmohan Singh ji and Honorable former Congress President Rahul Gandhi ji has given very good suggestions for these crucial meetings. And our Chief Ministers also has given their experience relating to the COVID-19 second wave. After this, CWC approved a statement highlighting the current situation of the COVID-19 pandemic in the country and the need for a comprehensive action plan. The working committee asked the Congress workers and leaders throughout the country to come forward with a helping hand with the poor people of the country, those who are affecting this pandemic. And especially Congress President has given a clear message that it should be on top priority to save the life of the common people, those who are suffering due to this pandemic. And CWC also asked the PCCs to set up and strengthen state-level control rooms and helplines to assist the needy people, those who are suffering. Now, I would like to request our senior most leader, former Finance Minister, Chidambaram ji is here. He will read out the main statement which has been passed by the CWC. And definitely he will answer some of your questions. And after that, Ajay Maken ji will give Hindi version of the statement. Thank you. Yeah, can you hear me, all of you? Yeah. Okay. Now, the Congress Working Committee met today to consider specially the situation arising out of the pandemic, which is spreading like wildfire. I believe a copy of the statement has been distributed to all of you, both in English and Hindi. I do not intend to read the whole statement in English. I only wish to highlight certain paragraphs of the statement. As we meet today, the cumulative number of Little bit disturbance. 7, and the cumulative by any measure, India is among the most. The initial response measures of the central government were ludicrous, to say the least. The Prime Minister went on national television
to exhort people to clang play. For weeks, he went on national television to exhort people to light lamps. Medical experts held back their criticism of such superstitious rites, and knowledgeable persons cautioned the government that it ought to take scientific measures to confront the pandemic. The only course that was feasible was containment. That required testing, treatment. India lockdown government. The result was total chaos and a shutdown of all economic activity. You would recall that millions of people walked hundreds of kilometers without money, without food, without medicines, and without help whatsoever. And an estimated 198 people died on the way. On the eve of the third lockdown, the Prime Minister did not appear on national television. The central government quietly passed the buck to the state governments, even while it retained power to issue orders and directions. The worst blow was the central government did not release sufficient funds to the state governments to fight the worst medical emergency that the country had faced. Cash-strapped state governments did their best to mobilize doctors, nurses, health workers, testing kits, hospital beds, ventilators, oxygen cylinders to fight the pandemic. Thanks to the efforts of the state governments and no thanks to the central government, the pandemic waned and there was a sense of relief. Nevertheless, experts warned that a second wave was possible and perhaps imminent. They cited the examples of several European and Southeast Asian countries. Thankfully, 2 vaccines had been developed in India and a few more were available in the world. This is where the central government failed miserably. We are now going to read specific charges against. I know it is like a charge sheet. The central government colossal mismanagement following reasons. Sufficient public awareness that a waning pandemic could be a precursor to a second wave that will be more devastating than the first wave. 2, failed to rapidly scale up the production and supply of the 2 approved vaccines in India by providing sufficient funds and other concessions if sought. 3, failed to resort to compulsory licensing and production of the 2 approved vaccines in other pharma manufacturing facilities in India. 4, failed to universalize vaccination after health workers and frontline workers had been vaccinated in phase 1. 5, failed to get rid of pre-registration and bureaucratic control over the vaccination program. 6, failed to leave the vaccine rollout to the state governments and public and private hospitals. 7, failed to prevent in other countries to augment the supply of vaccines. 11, failed to adopt a need-based, fair and equitable allocation of the vaccine doses to the various states. Official data shows that several states governed by opposition political parties got less than their fair share despite their need. 12, failed to curb the exports of large quantities of vaccine doses to other countries. While some quantities should have been donated to small and developing countries,
the zeal to export to rich countries was unwarranted. 13. Failed to provide adequate funds to the state governments that were fighting a two-front war, one against the pandemic, other against the economic risks in the opaque PM Cares Fund. 14. Failed to eschew the rhetoric. Remember, the PM claimed that we will win the war against COVID in 21 days, compared to the Mahabharata war that was won in 18 days. And ministers made self-congratulatory utterances to the effect that the whole world has praised the manner in which the Prime Minister has tackled the pandemic. We regret to say that the nation is paying a heavy price for the thoughtlessness and unpreparedness of the NDA government to tackle the gravest disaster that has hit the country and has affected millions of families, claiming 1,74,306 lives so far. It is a shame that the country with the world's largest vaccine manufacturing capacity, odium, among the most affected countries in the world, that unless urgent corrective measures are taken, the nation faces an unprecedented catastrophe. May wisdom prevail. Now I wish to add the following. Several valuable suggestions were made at the meeting today. They are being collated. For example, the Congress President's opening statement contains very important suggestions. Dr. Manmohan Singh's opening statement contains 5 important suggestions. The former Congress President, Shri Rahul Gandhi, has made valuable suggestions, and others have contributed with their own suggestions. These are being collated. The intention is to collate these suggestions and draft a letter. The letter will be sent by Dr. Manmohan Singh to the Prime Minister tomorrow, containing our suggestions. I want to preempt criticism that we have been only negative in our statement. Of course, the statement is an indictment of the government. The government deserves to be indicted and charge sheeted. We have done that today. Our concrete suggestions will be sent in the form of a letter tomorrow. Was I audible to everybody? Yes, sir. You were. Yes. sir, you were. No, somebody interrupted. That's right. Yeah. Okay. All right. That is my statement. Now I can take questions now, or I can take questions after. Yes. Once we finish the Hindi part, also. Make statement. Yeah. Please go ahead with the Hindi part. Maken, over to Maken ji. Unmute yourself. आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ये स्टेटमेंट हिंदी और अंग्रेजी में सभी लोगों के पास में है, तो मैं इसको पूरा पढ़ने की जगह इसके कुछ मुख्य अंश मैं आप सब लोगों के बीच में रखना चाहता हूं। 30 जनवरी 2020 को पहला केस हमारे देश के अंदर पता चला था। उसके बाद 16 जनवरी 2021 को पहला वैक्सीनेशन शॉट हुआ, और उसके बीच की पूरा का पूरा 1 वर्ष एक कथा है त्रासदी की और सरकार के कुप्रबंधन की, जिसके अंदर 1,45,00,000 लोग संक्रमित हुए, 1,75,000 लोग मृत्यु से ग्रसित हुए। सबसे पहले तो सरकार ने सभी चीजों को एपिडेमिक एक्ट और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत सारी की सारी पावर्स केंद्र सरकार ने अपने पास रखी। उसके बाद में जो रास्ता दिखाया वो थाली बजाने का रास्ता था, दिया जलाने का रास्ता था, जबकि कंटेनमेंट रोकने के लिए टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रेसमेंट, ट्रीटमेंट जो कार्य करने चाहिए थे उसके अंदर पूरी तरीके से विफल रहे। बिना तैयारी के लॉकडाउन कर दिया गया, जिसकी वजह से 3 करोड़ लोगों का रिवर्स माइग्रेशन हमारे देश के अंदर हुआ। हमने देखा कि कैसे ये 3 करोड़ लोग पैदल पैदल हजारों किलोमीटर दूर अपने अपने गांव में जाने पे मजबूर हुए, और 198 लोग
इसके अंदर 198 लोगों की जानें इसके अंदर गई। तो ये एक प्रकार की त्रासदी और सरकार के कुप्रबंधन का पूरा जीता जागता उदाहरण था। अब जब तीसरा लॉकडाउन करना था, तो बावजूद इसके कि केंद्र सरकार ने सारी पावर्स अपने पास रख ली, अब तीसरे लॉकडाउन के लिए अनाउंसमेंट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स को आगे कर रहे हैं कि आप इस चीज को अनाउंस करें, आप इस बात को रखें, जबकि केंद्र सरकार ने इससे पहले, आप सब लोगों को याद होगा कि हमेशा लॉकडाउन की घोषणा, हमेशा सारे के सारे प्रबंधन और कुप्रबंधन दोनों के दोनों केंद्र सरकार ने अपने पास में ले लिए। हम लोगों ने 14 पॉइंट्स का एक तरीके से चार्जशीट, 14 पॉइंट्स के हम लोगों ने चार्जेस केंद्र सरकार के ऊपर लगाए हैं कि क्यों यह त्रुटि, त्रासदी एवं कुप्रबंधन की पराकाष्ठा है। ये 14 पॉइंट्स के अंदर हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। सबसे पहली विफलता सरकार की जो रही कि वो जनता को जागरूक करने में विफल रही कि प्रथम वेव में संक्रमण कम होना दूसरे वेव के आने की दस्तक है। ये केंद्र सरकार को इसके लिए लोगों को, जनता को जागरूक करने की जरूरत थी। लोग जैसे ही प्रथम वेव कम हुआ, संक्रमण कम हुआ, तो लोग जो है बेफिक्र होकर के बाहर निकले। तो यह केंद्र सरकार की सबसे बड़ी विफलता जागरूकता पैदा करने के अंदर है, जो कि हम लोग केंद्र सरकार से कहना चाहते हैं। 2 अप्रूव्ड वैक्सीन को पर्याप्त मात्रा में प्रोड्यूस ही नहीं कर पाई। हमारे को जो समय मिला, वो समय का इस्तेमाल, जब हमारा प्रथम वेव कम हो रहा था, तो उस समय का इस्तेमाल हमारे वैक्सीनेशन को और तेजी से प्रोड्यूस करने का था, उसको ये सरकार नहीं कर पाई। 2 वैक्सीन को भारत के अन्य फार्मा कंपनीज के अंदर प्रोड्यूस करवाने के लिए मौका देना चाहिए था, उनको इजाजत देनी चाहिए थी, लेकिन ये सरकार दोनों वैक्सीन को भारत के अन्य फार्मा कंपनीज के अंदर लाइसेंसिंग और प्रोडक्शन के लिए अप्रूवल देने में कामयाब नहीं हो पाई। हमारे हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स के बाद सभी को वैक्सीनेशन, यूनिवर्सलाइजेशन के अंदर सुनिश्चित करने की सरकार की एक बहुत बड़ी विफलता रही है। फिर यह पूरी वैक्सीनेशन की प्रोसेस भी ब्यूरोक्रेटाइजेशन के अधीन एक तरीके से हो गई। रजिस्ट्रेशन की जरूरत सब लोगों को थी और रजिस्ट्रेशन, कंप्यूटर, इंटरनेट की रजिस्ट्रेशन हर किसी के लिए सुलभ नहीं था, और इसी वजह से ब्यूरोक्रेटाइजेशन और रजिस्ट्रेशन के अधीन फंसी हुई वैक्सीनेशन को जो लोग चाहते हुए भी बहुत सारे लोग नहीं ले पाए। राज्य सरकारें और प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी इसी वजह से, इसी ब्यूरोक्रेटाइजेशन और रजिस्ट्रेशन की वजह से उनको भी अधिकारों से वंचित रखा गया। 23 लाख डोज वेस्ट हो गए। हमारे यहाँ पे वैक्सीनेशन की जरूरत है और 23 लाख डोजेज वेस्ट हो गए। इससे ज्यादा बड़े शर्म की बात नहीं हो सकती। और इसका एक बहुत बड़ा कारण ये था कि जब डोजेज वेस्ट हो रहे